We've had a fabulous game to watch in Dubai meantime, but we have a full-ish panel with you here tonight. First of all, my co-host is Sana Mir. Sana, very good evening to you. Thank you. Good evening to you too. In whichever language you prefer. I think I'll be bilingual today. Absolutely. Well, we're all kind of bilingual. To my right, Aaqib Javed has changed sides from that side, the Urdu side, to the English side. Improved, man. Looking, Good boy. this is a reward for some very, very fine work. It is. Nothing against these guys, of course. But Richard Javed is back again, looking as suave as ever. Good to see you. Very nice to have you with us. And to our left, Azhar Mahmood, welcome again. Thank you very much, sir. Rashid Latif, Good evening, sir. very good evening to you, sir. Umar Gower, very good evening to you as well. Good evening, sir. Now, we have, let's say we have a pretty full panel. We have just the one game to look at today. So let's just remind you what we've seen today. The game between Australia and Sri Lanka in Dubai. And these were the figures at the end of the day. Sri Lanka put into bat first, 154 for 6, a sparkling start. They were racing away in those first 6 overs, but got pegged back. Australia then, in the end, again, a very quick start. They had plenty of time to spare at the end of the day. 17 overs, that's all they needed. So their net run rate, of course, will go up as well. But comfortable winners by 7 wickets. And the most encouraging thing for Australia would have been the form of that opening partnership. Warner 65, Finch 37. Both of them failed in the first game of this tournament. So they will be much happier, both as an opening batsman and in Finch's case as a captain. And the job is done. So Australia take the points. In fact, if we look at the points table as well quickly, if we can just do that now, just to establish where this gets these two teams in this group. If you just check out the points table, England on top with 4, Australia comes second, so both have played 2 matches, both have won 2 matches now, 4 points each. Run rate, of course, at this stage is still developing, but England's is very, very good at 3.61, Australia 0.73. And so the catch-up is, of course, vital for people like South Africa, Sri Lanka. Bangladesh and West Indies, you can probably say, Viv, I'm afraid, are, what's the word for it? The polite word for it, I think, is struggling. Definitely. And especially if you would have played that badly, you have every right to be in the position that you are now. Let's leave the West Indies out of this. Today was all about Australia and Sri Lanka. Now, at the start of the day, this is all about one side putting themselves in a position on the points table to give themselves a real springboard towards the semi-final. So Australia have done that. Yeah, no surprise in this group. Quality-wise, preparation-wise, Australia, England always looked organized teams. The third team which impressed me is Sri Lanka. Yeah. Just imagine the new team, new group, and if somebody hold this group for another 2 years, they have everything to become a top team. Quality spin options, 2 pace bowlers, and they have good all-rounders, and I can see a skillful batting. First 10 overs, they were almost cruising. Then, of course, the experience and the class which Aussies has, real pace and spin. I think whoever is behind this planning is perfect. Mickey Arthur, I suppose. Yes, Mickey Arthur. And if you compare Sri Lankan progress and comparing with the West Indies average age would be 38 or 7 or something like that. Could be 40. Could be 40. So they can't move up from this, isn't it? So Sri Lanka is policies and the organization. I liked it. So I think a fair game. Aussie deserves this win, isn't it? Yeah. Sticking with Sri Lanka, Viv, this youth policy. It's the thing about watching world cricket is that quietly people come up without you really noticing until you put them on a world stage like this. Some of that stroke play at the start in those first 6-7 overs was extraordinary. I'm very disappointed in the end to see that it only got to 150 whatever. But the way in which they started, it looks like it was going to be a total of maybe 170, 180. And that, I think, would have given them a reasonable chance for them to compete against a very powerful Australian team, especially when you look at the lineup for the Australian team and its batting unit. It's very special. And as you can see today, I know the Aussies would be quite pleased to see someone like maybe a David Warner
come into form. And gradually, Stonis got into a bit of, got plenty others as well. You have Finchy, who at the top of the order. And I guess it's always nice to just creep your way into things. You cannot afford to peak too early. Yeah. And certainly, they are in a good place. Yeah. Right, Sana, over to you to question your very good boys on the left. See what they feel about this game between Australia and Sri Lanka. तो मैं मेरे ख्याल से राशिद भाई आपसे शुरू करना चाहूँगी कि जो श्रीलंका की पहले भी बात हुई, ऊपर से बैटर्स ने अच्छा खेला, 78 for 2 था, 78 पे एक ही खिलाड़ी आउट था. मिडिल ओवर्स में 7 से 15 ओवर्स तक 52 रन्स बने और 4 विकेट गिरी. इस मिडिल ओवर में आपको लगता है बैटिंग अच्छी नहीं हुई या बॉलिंग बहुत अच्छी थी? मेरे ख्याल से मिचेल स्टार्क को जब लेके आए, ये 11th ओवर एंड 13th ओवर शायद किया है, जिसमें कुशल परेरा को आउट किया और हथारंगा को आउट किया है इन्होंने, तो वहाँ पे टर्निंग पॉइंट था. यहाँ पे ये जा रहे थे, तकरीबन 12 ओवर में 85-86 रन हो गए थे. इसका लग रहा था 170 प्लस रन बनने चाहिए थे, लेकिन वो जो स्पेल लगा यहाँ पे 2 विकेट्स लिए हैं इसने. और जो बोल्ड किया यॉर्कर के ऊपर, वो बहुत ही, उससे पहले वाली बॉल क्रॉस सीम की थी उन्होंने और वो नज़र आई और उन्होंने मारी, लेकिन अगली बॉल सीम पकड़ के जब की है उन्होंने, स्विंग हुई है और गेंद डिप हुई है, नीचे स्टंप पे जाके लगी है. उसके बाद वाली बॉल भी जो अगले ओवर में की उन्होंने, उसको भी बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया. इन कंडीशन में बॉल कैरी कर रही थी, क्योंकि फास्टेस्ट बॉलर हैं वर्ल्ड के, वो कैरी कर रही. नो डाउट जम्पा ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, उसमें कोई नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैच को जो चेंज किया है इन ऑस्ट्रेलियन फेवर, वो मिचेल स्टार्क ने किया है. तो मिचेल स्टार्क की बॉलिंग को आप समझते हैं कि ज्यादा इंप्रेसिव थी? नहीं, बैटर ने उनकी भी थी, हाँ. इतनी गलतियां क्योंकि वीक लिंक, ऑस्ट्रेलिया का वीक लिंक बहुत ज्यादा है. स्ट्राइनर से 3 ओवर के 35 रन दिए, 16 रन दिए हैं मैक्सवेल ने, 51 रन इन 4 ओवर. तो ये वीक लिंक है इनका अगेंस्ट टॉप एशियन टीम लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान. आज 2 लेफ्टी थे, अजहर भाई और मैक्सवेल से स्टार्ट किया उन्होंने, लेकिन पहले ही ओवर में 16 रन आ गए. उसके बाद की कप्तानी कैसी लगी आपको? आई थिंक उनकी अगर आप कप्तानी देखें तो प्लान था 2 लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट, और हमने देखा जैसे पहले भी मैच में मैक्सवेल ने नया बॉल किया था और उसने बड़ा अच्छा किया. उसका एक्सपीरियंस भी है, आईपीएल में भी वो नया बॉल करता रहा है. तो उसके बाद जाहिर सी बात है ये वर्ल्ड क्लास साइड है, तो जाहिर सी बात है कि उनके वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं जैसे हेजलवुड, कमिंग्स एंड मिचेल स्टार्क और जैम्पा. आई थिंक कि वो इतना आसानी से आप रन नहीं बना सकते. और यहाँ पे जो है ना, पावर प्ले में जिस वक्त आप करते हो तो आप एडवांटेज लेते हो, नया बॉल है. आई थिंक कि बेस्ट कंडीशन होती है जब पहले 6 ओवर में आप पावर प्ले में रन्स करते हो. जितने ज़्यादा रन्स बनाते हो दैन बॉल जो है ना थोड़ा ग्रिप होना शुरू हो जाता है, दैन स्पिनर कम इनटू प्ले, तो वो थोड़ा सा जो है ना बैट्समैनों के लिए मुश्किल हो जाता है रन बनाना. जितनी भी टीम की प्लानिंग होगी वो आई थिंक कि फर्स्ट 6 ओवर में वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे. जैसे परेरा हैं, वो हमें पता है कि वो जे सूर्या की तरह खेलते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा शॉट्स हैं. और आई एम रियली इम्प्रेस विद श्रीलंका, जिस तरह इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह की बैटिंग की है. ही इज़ अ स्किलफुल यंग प्लेयर एंड उसके पास लॉट्स ऑफ शॉट्स, यू नो, लाइक उनके पास स्किल्स भी हैं और गैप बड़ा अच्छा वो क्रिएट करते हैं. तो आई थिंक के मैं वही कहूँगा कि अगर 78 पे 2 थे, 94 फॉर 4 विकेटें उनकी गिरी हैं उस पर. वहाँ पे आके जब आप T20 फॉर्मेट में उसी वक्त आप दूसरी टीम को कंट्रोल कर सकते हैं जब आप उनकी विकेटें लेते हैं. अगर बैट्समैन सेट हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि कंट्रोल रन रेट को कंट्रोल करना. आई थिंक वहाँ पे उनका रन रेट नीचे आया है, जो प्रेशर पड़ा है, फिर उस तरह का फिनिश नहीं हुआ. फिर मिचेल स्टार्क का जिस तरह की राशिद भाई ने बात की, और जम्पा 4 ओवर में उन्होंने 12 रन दिए हैं और 2 आउट किए हैं और क्रूशल टाइम पे वो आउट किए हैं. So before I go to Umar, what Rashid and Azhar are mentioning here is the bowling of Mitchell Starc, how he came into the middle and in that 1 over got 2 wickets and pulled the match back into Australia's grip a bit more. Just go back to Umar and give it to you. So Umar भाई, आप मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव इनके लाइनअप में कौन आपको लगा है जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग, अभी हम पहले अगर इन्हीं की बात करें? देखिए, अगर मैच से पहले हमने कुछ स्टेट वगैरह देखे, जिस तरह बिफोर द मैच श्रीलंका और उनकी ऑस्ट्रेलियन टीम की कंपैरिजन हो रही थी बिफोर द मैच, तो श्रीलंका को काफ़ी अच्छा वो रेट कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह कन्विंसिंगली उन्होंने लास्ट मैच में चेस किया अगेंस्ट बांग्लादेश और फिर जिस तरह दूसरी टीमों को पहले बॉलिंग में रिस्ट्रिक्ट किया, तो वो बड़े ज़बरदस्त एक शेप में लग रहे थे. लेकिन आज जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया है, स्पेशली फर्स्ट पावर प्ले के बाद जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था 53 for 1 और जिस तरह श्रीलंका और कुशाल परेरा खेल रहे थे, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आज अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने
स्पिनर के साथ स्टार्ट नहीं किया, इवन दो दे वर प्लेइंग विद टू लेफ्टीज, लेकिन उन्होंने अपने फास्ट बॉलर को प्रेफर किया क्योंकि विकेट में थोड़ा सा वो था, बॉल निकल रहा था उस पर, ग्रिप उस तरह नहीं हो रहा था जिस तरह अबू धाबी में बॉल ग्रिप हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि पहले पेसर से किए, जो कि ऑल दो परेरा बड़ा अच्छा उसको कह रहा, मैक्सवेल को ट्राई किया लेकिन उसको रन्स पड़े। लेकिन जो पावर प्ले के बाद जिस तरह जैम्पा ने बॉलिंग किए, अपने वेरिएशन किए, बिल्कुल वो टोटली दूसरे स्पिनर से आज थोड़ा डिफरेंट लगा क्योंकि वो वेरिएशन के साथ बॉल कर रहा था। मेनली वो अपने लेग ब्रेक पे रिलाई कर रहा था और पेस को यूज़ कर रहा था, तो उसकी वजह से उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और फिर जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि जो स्टार का जो सेकंड स्पेल था और जो 2 आउट किए, तो मेरे ख्याल से वो टर्निंग पॉइंट था श्रीलंका के लिए कि वो उन्होंने वहाँ से पुल बैक किया श्रीलंकन साइड को, और एक टाइम पे लग रहा था कि 170-80 हो जाएगा, जो कि विकेट था उसका 170 वाला स्कोर वाला था। लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज टू बॉलर जिस तरह उन्होंने वापस किया, और फिर जिस तरह अटैक किया ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने, तो उन्होंने बिल्कुल भी किसी भी बॉलर को सेट नहीं, उन्होंने ऑल दो उनका जो सबसे ज़्यादा वो रेट हो रहा था तिक्षाना, उसको स्पेशली अटैक किया क्योंकि वो एक मिस्ट्री बॉलर था और उन्होंने प्रेफर किया कि यार इनके जो बेस्ट बॉलर उसको अटैक करें। तो मेरे ख्याल से बड़ा एक तो मैच बड़ा ज़बरदस्त, मज़ा आया देखने का। So he's saying that Sri Lanka came into the match more favourite because the way they were winning the 4 matches, but Australia really got a very big turnover after the power play, because after the power play in the middle overs, it was the bowlers, Stark and Adam Zampa with their variations and Yorkers. No, a very, very good summary, because that sparkling start seemed to be going Sri Lanka's way for the first 6 overs, almost 10 overs actually. And then those wickets the guys have been talking about certainly pegged it back, and this kept the game under control for Australia. If we look at the way the Sri Lankan wickets went down, this will in its own way tell the story. First of all, straight up in the air, and the catching by and large in this tournament has been very good. That was relatively straightforward. Cummins doing the first bit of damage. Then the sweep shot, gentlemen, the sweep shot started to come into play, and not quite out the middle. Well, most time, this is a delivery that I think most of the commentators were speaking about. Look at the slug to the leg, and for some reason got a top edge. And he's not going to drop that, Steve Smith. No movement of the feet again, as you can see, just standing and having a go. Here we go again. And I guess when you have someone like maybe a Mitchell Stark coming in, he's world class. You know, so some of the deliveries that he bowled, and I can remember it, one of the commentators saying things like the Yorker that he bowled to the batter, he said that could be the ball of the tournament. I don't think that they did see Shahid bowl that delivery, Afridi, that he bowled as well. I think that would be also contested in terms Well, of... I think by the time you work it out, if you go through 3 or 4 weeks of a tournament, there are going to be 1 or 2 more candidates for... That's right. And the ballers, I mean, Trumpelman the other day for... Yeah, that was for beautiful. Namibia, some cracking deliveries there. I mean, the great thing about someone like Mitchell Stark, though, surely, is this. If he strikes early, you get off to a great start. If he's able to come back in the middle and peg it back, I mean, that's almost as valuable. Yeah, he's a wicket taker. So he's the one captain used to take wickets. And sometimes when he comes around the stumps and moves away at the times, that is the most difficult angle for any batsman. So he's the one who there to look for wickets all the time. And then Zampa today was outstanding, being a Sri Lankan team. But this is what happening on UAE wickets. First 10 overs, hard ball, skidding through a little bit, and the challenge starts after 10 overs. When it started, gripping, the ball gets softer. That's the management that batsman has to tackle. But this tactic of going around the wicket, the left arm around the wicket, is something that a name that I think you'll recognise, Wasim Akram, did an awful lot as well, but able to swing it Especially both the ways. 92. He was the Any king. year, any year, but 92, you're right. Yeah. He was the king. Alan Lamb delivery. Are we talking World Cups that England lost? Yes, we are. Okay. Yeah. But no, I mean, you're right. I mean, Wasim, both in that World Cup in 92 Yes. and in Test cricket, of course, outstanding, using the angle, using the ball that was, Yeah, he especially the older ball I swing. think he was one of the best left-arm seamer I ever seen. And like we're talking about Mitchell Stark here, like he has the ability to take wickets.
and he is world class. And captain use him for take wickets. My turn is in Urdu. Sorry, guys. Can I tell you a little secret? Yes, sir. About Wasim? I'm so glad just when he came, right, I was looking to retire. And I'm so glad that I retired that time because he was special, man. Yeah. He's one guy that you could not really get a hold on. Comes around that wicket and he gets the ball to just straighten. It's amazing. I think he's a class act, man. And to be fair, all the other lefties that you would have seen now, what you're seeing they're doing is a pattern from what Wasim would have achieved. Well, do you want to check with the guys? And because you always give so much credit to other players, that's why you're so well respected. I was fairly good at what I do, but there's some guys, who sometimes can get you undone as well. And he's one of those individuals that I have, if there's anything like 150% in terms of what he brings, that's it. And sometimes when he's bowling around the stumps, he runs behind the umpire. ये मेरा काम है. Okay. देखा क्या होता है रिवर्स स्विंग को छुपाने के लिए तो कि ज़्यादा देर तक बैट्समैन को नजर ना आए बॉल तो वसीम भाई आते थे एम्पायर के पीछे से और एकदम से सामने आके बॉल को डिलीवर करते थे. टाइम नहीं मिलता था बैटर को कि वो इन स्विंग है ये स्पेशली रिवर्स स्विंग में राउंड दैट स्टंप जब आते थे तो बॉल को हाइड करते थे. जब एम्पायर के पास से निकलते थे सामने बैट्समैन होता था. बैट्समैन को लेट हो जाता था और मुझे देखना पड़ता था कि रिवर्स है या ये इन स्विंग है या आउट स्विंग है क्योंकि टोटली कीपिंग रिवर्स स्विंग में डिपेंड करती है कि आपको बॉल का पता होना चाहिए कि बैट्समैन के ये इन स्विंग आएगी या आउट स्विंग. और मेरी पोजीशन वैसी होगी अगर आउट स्विंग है तो मैं अपनी पोजीशन फर्स्ट स्लिप की तरफ कर लेता हूँ कि वहाँ पे कैच आएगा तो वहाँ पे जाऊँगा. अगर इन स्विंग प्रांग से जाएगी तो मुझे यहाँ मूव करना पड़ेगा. तो इससे अच्छा बॉलर मैंने नहीं देखा. मैं लकी हूँ. वसीम अकरम हो वकार यूनुस शोएब अख्तर लोगों ने टीवी पे देखा मैं उनके सामने से कीपिंग की है. तो वो मेरे लाइफ की जो ग्रेटेस्ट मोमेंट है ये इन तीनों बॉलर के और भी है. आकिब की स्विंग है लेकिन रिवर्स स्विंग अगर देखे जाए तो इन तीनों से बेहतर नहीं था कोई भी. Okay. I'm sure we could talk about Wasim for a long, long time, but there are people here saying we need to take a break. So hold that thought. Hold that thought. We'll be right back with you. Quick break and more from Game on Hay.